start by actually asking you a question. Which profession or vocation do you think is the most trusted in the world? It applies to India as well. Teaching. Anybody can take a shot. Teaching, sir. Teaching, okay. Come on, go ahead, take a guess. There's no right or wrong answer, but there is one big right answer. Yes. Which is the most trusted profession in the world? Sports. Okay, because I have 15 minutes, I'm going to try and interrupt you, although I would love to hear more voices. Social work. Social work, well, the answer is all of you are right to a great extent. Teachers are very, very Social work. respected. But the most trusted, and this is, by the way, done by very dispassionate and highly respected research institutions, is doctors, is nurses. And after the pandemic, you'll all agree with me that we all realize what that nurse, what that person who works in the dispensary, what somebody who works in a public hospital that we otherwise don't even tend to recognize, what a difference they make to our lives. Now, let me pose you another question. What do you think is the least trusted or the least respected vocation in the world? And you are not going to get any marks for guessing this one. Politicians. Absolutely. Absolutely. You got it right. You got it absolutely right. And politicians and media advertising, they're really at the bottom of that entire survey. Now, I don't want to come here and take 15 minutes in trying to be romantic. Are we here to be romantic or are we here to be real? Real. Real. Let's get real, okay? We have to bite the bullet. And therefore, I need to address this question to you upfront. Can we really blame the people? And this is, by the way, not just a peculiar Indian problem. It's a global issue. I mean, you go to America today, you go to UK today, you go to any democracy in the world today, and the crisis is of similar proportions, if not more. So here is my question. Do you blame the people today? And let's talk about our society, our country. Do you really blame? क्या हम अपने आवाम को, क्या आवाम की हम आलोचना कर सकते हैं, उनकी समीक्षा करेंगे कि आप लोग जो राजनेता हैं, उनके बारे में आपका जो भी नज़रिया है वो इतना कमज़ोर क्यों है? Can we blame the people? No, we can't blame. You can't. You can't. You really can't. I mean, forget the data. I'm not going to get into data. And by the way, I may have been a former spokesperson at a national level for the Congress party, but this conversation from me is bipartisan. I respect whichever party you come from. I respect whatever ideology you have. I think, let me make this very straight, that whichever party we represent here on this forum, we all are eventually looking at India, which is our country. Your way of getting there may be X, my way of getting there may be Y, a third person may be wanting to get Z. But we all care for our great country. Yes or no? Yes. Absolutely. Therefore, my point, can we really blame the people? Whether it's crime, whether it's corruption, whether it's, a dodgy track record in terms of the way what we say and what we do, whether it's in terms of the way we switch parties. Ayaram, Gayaram is a very famous term in our Indian politics. Do you really trust that the Indian people should trust us because of the fact that we are public faces? They watch us very closely. And it doesn't matter who wins or loses. Eventually, when everybody says that we need to attract good people into Indian politics, who do they look up to? And that is a real challenge. And ladies and gentlemen, despite the fact that there are many challenges, इसके बावजूद कि हमारे समाज में इतनी चुनौतियां हैं, इतनी मुश्किलात हैं, आप सब लोग यहाँ आए हैं 15 मिनट के लिए मुझे सुनने के लिए और सेठी साहब को सुनने के लिए और अपने आप में वार्तालाप करने के लिए, क्योंकि आप में एक भरोसा है, आप में एक उम्मीद है कि things can change. You are here, ladies and gentlemen, not because you're an MLA, not because you're a minister,
or not because you are a future minister or a future MLA. You are here today because you represent the voice of the voiceless. You are today representing dreams. You are today representing expectations. You are today representing hopes. आप जब एक राजनेता बनते हैं, चाहे आप राज्य के हों या देश के नेता हों, आप पर आपकी आवाम, आपकी जनता का सपना आपके कंधों पे है. It's not a small thing. When you decide to run for office, and you have such an eminent gentleman here on my right, you realize that you are actually living to fulfill the aspirations of those people who look up to you like as if you are a demigod. It is not a small responsibility. You are the future of this country, ladies and gentlemen, because you have chosen to become legislators and hopefully tomorrow parliamentarians and living a much bigger political aspiration. But it comes with responsibility. You know that famous film Spider-Man? It says, with authority comes responsibility. आप उत्तरदायित्व बन जाते हैं, आप पे बड़ी जिम्मेदारी है. ये सिर्फ एक पद का एक जो हम दिन ब दिन लड़ते रहते हैं कि कौन ये बनेगा कौन वो बनेगा, उससे नहीं होता है काम. So now let me answer the question, what are the tools and techniques that you need to build your image? And I'm going to disappoint you this afternoon. और मैं आपको खुलेआम कह रहा हूँ कि आपको मैं बहुत निराश करने वाला हूँ. I'm not going to give you any tool and technique. None. You'll ask me why, ये कैसा आदमी है यहाँ बैठा हुआ है, दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है, लेकिन कहते हैं कि यहाँ 15 मिनट बोलेंगे लेकिन हमको tools और techniques नहीं बताएंगे. Because I'll tell you what, the tools and techniques are very simple. You can, in today's day and age, create a massive social media profile. You can have Instagram account, you can have Twitter, Facebook, YouTube, hire a social media agency. Filter your expression. Put all the best pictures. Put the pictures only where you are actually smiling, where somebody comes and says, aapke jaisa to koi nahi hai. Put the videos, put the clips, and you can be a star on social media. You can hire a public relations firm that will take care of your exposure in print and television. Hire somebody for media training who will tell you how to go on television, और चाहे आप एक क्षेत्रीय भाषा में बोल रहे हो या चाहे आप हिंदी या अंग्रेज़ी में बोल रहे हो, आपको मीडिया ट्रेनिंग करके उसके लिए भी सिखा लेंगे. आप चाहें तो आपको कैसे फंड रेजिंग होता है उसके बारे में भी लोग सिखा देंगे. आप यू मस्ट कम ऑन टाइम, यू मस्ट बी वेल ड्रेस्ड लाइक वी ऑल आर. Everything can be taught. But ladies and gentlemen, here is the truth. The hard truth that you need to know. Image cannot be outsourced. आपका जो एक image है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, it cannot be outsourced. I'm going to name to you a few leaders that inspired me and continue to inspire me today. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln was the man who brought an end to slavery in America. Have you heard of him? Winston Churchill. Controversial as far as India is concerned. But a man who helped Britain to hold on and was responsible, in fact, for the successfully stopping the Nazis of Hitler. And his famous speech, blood, tears, toil and sweat. पढ़िएगा Google में. Let's look at FDR, F.D. Roosevelt, who during the time of the Great Recession in the 1930s helped save the world economy. Nelson Mandela, how many years was he in jail, ladies and gentlemen? Close to 30 years. And went on to bring an end to apartheid in South Africa. Our own Pandit Jawaharlal Nehru, a world statesman, who wrote a book called Discovery of India by Hand when he was in jail, and probably is the creator of a modern liberal India. Let's look at Martin Luther King Jr., a man whose famous speech, I have a dream, resulted in the end of the
anti-discrimination against the African Americans come to end in America. Barack Obama, the first black or African American president of the United States. Why am I quoting to you people like Lincoln and Churchill and Pandit Nehru? Let's can you hear me, everyone? Yep. Let's add John F. Kennedy to it. Don't ask what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Why am I quoting to you the name of several of these leaders? And there are many leaders from India we can include, including Sardar Patel, Netaji Subhash Chandra Bose, etc., that we already know. I'll tell you why. Because when you look at all these leaders, ladies and gentlemen, you'll find three things that are common. And these are these three things that make your image. And now I'm going to tell you the toolkit, the famous word toolkit that we use in India very often. What are the three attributes that you need for your image? So I told you I will not tell you any techniques, and now I'm telling you what the techniques are. And the technique number one, which you'll find running through all of them, number one in English, is authenticity. All these leaders were authentic. जिसको हिंदी में कहते हैं सत्यता. What they said, what they were, is what they came to you. They did not wear a mask. जो थे वही आपने देखा. What you see is what you get. उनमें एक सत्यता थी. कोई वहां पर बहरूपिया नहीं था. हमेशा याद करके रखिएगा, आप राजनेता हैं, इमेज बनाइए, लेकिन अभिनेता मत बन जाइए. ये सबसे बड़ा आपके लिए जो एक संतुलन आपको अपनी जिंदगी में लाना पड़ेगा. और ये कड़वा सच्चाई है. हम लोग सब जानते हैं कि हमारे पर बहुत बड़ा एक बोझ होता है कि हम चुनाव जीतें, एक चेहरा दिखाएं. चेहरा दिखाइए, लेकिन वो चेहरा आपके साथ वो चेहरा होना चाहिए. So the first word is authenticity. Be authentic, ladies and gentlemen. आप लीडर बनना चाहते हैं ना, तो ऑथेंटिक बनिए. दूसरा, क्रेडिबिलिटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विश्वसनीयता. वॉक द टॉक, जो कहते हैं वो कीजिए ना. जो घोषणा करते हैं उस पर आप सच आइए. ये जो सबसे बड़ा जो एक मैं समझता हूं कि एक जो खामियां हैं हमारे एक राजनीतिक इकोसिस्टम में. आप जाइए किसी को भी पूछिए कि लीडर्स क्यों नहीं रीइलेक्ट करते हैं. क्योंकि पीपल कहते हैं कि यार मैनिफेस्टो में ये बोला, आपने किया नहीं. आपने ये वादा किया, आपने किया नहीं. ये एंटी इनकम्बेंसी और प्रो इनकम्बेंसी का डिबेट जो है वो आपके ऊपर निर्भर है. क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता बहुत बड़ी चीज होती है. यदि हमारे पास, यदि आप मुझे अभी सुन रहे हैं और आपको लगे कि ये शख्स भाषण तो दे रहा है लेकिन बाहर जाके कुछ और करेगा, तो आप हम पर क्यों भरोसा करेंगे भैया? Why will you even bother to trust me? So the second big attribute is विश्वसनीयता. The third is integrity. और integrity मतलब पवित्रता, ईमानदारी. और देखिए, इंटेग्रिटी का मतलब यही नहीं होता है कि मैं गलत काम ऐसा जिससे घूस और करप्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं. सिर्फ इंटेग्रिटी वो होता है कि जो शख्स अपने वादों पर, अपनी सोच, अपनी विचारधारा के लिए खड़ा होता है. और यदि आप में ऑथेंटिसिटी हो, क्रेडिबिलिटी हो और इंटेग्रिटी हो, आपका इमेज 10 पर 10 आ जाएगा. सोशल मीडिया, पीआर फर्म, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीविजन प्रेजेंस, नुक्कड़ पे आपके भाषण, जनता का आपके बारे में जो भी राय हो, वो कभी गलत नहीं होगा. और देखिए, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, और यही मेरा ये लास्ट पैराग्राफ में ही होगा, कि देखिए ये इमेज जो है ये इसीलिए नेगेटिव हो जाता है या नकारात्मक हो जाता है क्योंकि हम आलसी हो जाते हैं. हम जीतते हैं तो हमको लगता है कि अब तो हम कभी हारेंगे ही नहीं. लेकिन हमेशा याद करके रखिएगा, कोई राजनीतिक दल हमेशा जीतता नहीं और कोई राजनीतिक दल हमेशा हारता नहीं. ये ज़िंदगी का एक जो कहे ना एक अफसाना है. और इतिहास यदि आपको लिखना है भाई और बहनों, इतिहास कलम से नहीं लिखे जाते हैं. इतिहास आपके काम और आपके हौसलों से लिखे जाते हैं. इतिहास लिखना जो है ना, आपका कार्य वो निश्चित करेगा.
इतिहास लोग गलत तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आप यदि सकारात्मक रचनात्मक काम करना चाहते हैं तो आप अपने काम से वो दिखाइएगा, सिर्फ भाषण से नहीं। और इसीलिए आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा, इस बात पे एक बड़ी अजीब सी, इतिहास को जाइएगा तो एक बड़ी अजीब सी बात है। दो शख्स जो एक साथ, दे वर पार्ट ऑफ द सेम जनरेशन, और वो एक जनरेशन में एक साथ थे लेकिन बिल्कुल विपरीत हैं। एक का जन्म 1868 के 2 अक्टूबर को हुआ था और दूसरा का जन्म 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। आप गेस कर लीजिए कौन है। One was a man called Adolf Hitler, who went on to murder 6 million Jews, ran concentration camps, and believed in Aryan superiority and racial superiority, wanted to capture the world and destroy people who stood in his way. At the same time in India, there was a man called Gandhi ji. Same time. And Gandhi ji stood for non-violence and peace. एक आदमी जर्मनी नहीं है, मैं ज़्यादा दूर नहीं, आज आप फ्लाइट प्लेन में बैठेगा, आप फ्रैंकफर्ट 9 घंटे में पहुंच जाएगा वहाँ पे। एक आदमी वहाँ पर लाखों को मृत्यु के, जो कहते हैं कि, दर पर पहुंचा दिया था। और एक आदमी उसी वक्त भारत के देश में ही वॉज फाइटिंग वेयरिंग अ लॉइन क्लॉथ, एंड उनके मेहनत से अहिंसा, प्रेम, सत्याग्रह, and when India became free, the British Empire came down. भाई और बहनों सोचिए, they were both alive at the same time. Gandhi ji got assassinated in 1948. Hitler committed suicide in 1945. And उनकी destinies are linked together. तो मैं आपको अंत में ही कहना चाहूँगा कि भाई और बहनों, आप अपना भविष्य अपने चॉइस से करते हैं। Hitler chose what he did. Gandhi ji made his own choice. In politics, ladies and gentlemen, we have to make our own choice. What do we want to be? और आप पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, मैं तो कहूँगा आपसे कि ये महान देश है। इस देश का भविष्य मैं समझता हूँ कि उज्जवल है, चाहे हमारे सामने जितनी भी कठिनाइयाँ हों। लेकिन आप यदि अपना बाहर कम कर लीजिएगा तो आप सोचिएगा कि यार सब लोग ऐसे ही हैं तो मैं भी ऐसा रहूँगा, तो देश बदलेगा कैसे? यहाँ पर भारत में हमारे पास ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कहती ये बार को बदलो। और उस बार को बदलने के लिए मैं आपके सामने एक बहुत ही पर्सनल चुनौती देता हूँ। क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट अ सोसाइटी, क्रिएट अ कंस्टिट्यूएंसी, क्रिएट अ स्टेट, क्रिएट एनीथिंग यू वांट दैट यू आर प्राउड टू लीव बिहाइंड फॉर योर चिल्ड्रन। जो आप अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाएं, जिससे आपको लगे कि मेरे बच्चे वहाँ पर खुश रहेंगे, मेरे बच्चे वहाँ पर खुशहाल रहेंगे, मेरे बच्चे वहाँ शांति से सोएंगे। वैसा समाज बनाइए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए। यदि वो एक ऐसा स्वार्थ है ना जिसमें कोई भी शख्स गलती नहीं करता, जहाँ पर अपने सिद्धांत, अपने आदर्श को कोई बेचता नहीं है। वी ऑलवेज फाइट फॉर अ चिल्ड्रन, दैट्स अ फ्यूचर जनरेशन। और मेरा पूरा उम्मीद है इन द एंड दैट इफ एनीबडी कैन डू इट, लेडीज एंड जेंटलमैन, यू कैन। I see in your eyes, आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, this is a time for lunch, but you're here. You're here to listen to some of us. Because you believe that things can change. You can. Don't set your sights low, ladies and gentlemen. Think big, dream big. This is a great country. We keep saying we are the world's largest democracy. Let's aspire to be the world's greatest democracy. Large तो बन सकते हैं, तो हमारे पास जनसंख्या है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। Can you become the world's greatest democracy? That is the challenge. I don't care which party we come from. It doesn't matter. But we are all committed to building a great India. So let me end by telling you a बहुत ही famous, a very inspirational quote that I live by. खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।